You may not always have a comfortable life, and you will not always be able to solve all the world's problems all at once. But don't ever underestimate the impact you can have, because history has shown us that courage can be contagious and hope can take on a life of its own. With India in the midst of an alarming second wave of COVID-19, the mood is one of gloom and doom. People are grief stricken at the loss of their loved ones, and others are facing the disease themselves. With oxygen and medicines in short supply in some states, the situation is one of absolute panic and helplessness. But the pandemic also given us ordinary young and women who have braved the pandemic with their strong willpower and determination, coming out victoriously as COVID warriors and superheroes. Good evening, namaste, shashriyakal, and salam alaikum to all my lovely spectators. I'm your host, Ms. Shelly Bish from Khwab Zindagi Ke, which is a show of bringing on boards all our brave hearts, our COVID fighters, who share their beautiful experiences with us and create social awareness about COVID. So, dear audience, let's invite and welcome our special guest for today, Mr. Pankaj Popli, who is from businessman. Let's hear his journey and celebrate his victory. So, Mr. Pankaj, I welcome you here on the show. How are you now? Thank you so much, and I would really love to thank Khwab Zindagi Ke for what exceptional work they're doing, bringing people back on their feet, giving them courage, hope, resilience. Hats off to you. Thank you so much for bringing me in. Right now, Mr. Pankaj, you are absolutely looking radiant and in the pink of the health. But I would like to know, how did you realize that you are infected by this virus? How did you feel? Yeah. So I guess once this virus was here in India, everybody was curious about what symptoms it has, and then we had so many things that we were listening to which were not even true, and some of them were definitely facts. So one fine morning, I got up, and when I was in the bathroom, I realized I'm unable to smell anything. So I took some soap in my hand. I tried smelling it. It was not there. Okay. I went my best perfume, the one I like the most, and I was unable to smell it. So I realized that there's something wrong. And then the biggest fear I had was, well, this is a symptom of corona. Yeah. It's a symptom. Although my head was fine till that time, I had no cough, nothing else, no symptoms other than this, losing my smell. But then still, the fear was that if I am a positive, then I have been staying with my family for past 4-5 days, and then any of them affected with this thing. Yeah. This is really said you are positive. Okay. But then, the fear didn't come in your mind, let the other family members also get tested, because you were living with them for another 5 days. Exactly. The thought did cross my mind. Yeah. I would not say that it did not cross my mind and I was not scared about it. Yes, I was. However, seeing them healthy and fine was giving comfort, because see, whatever situation you are in, you have to get your light of hope from that moment. Yes. So there's one particular experience I would like to share with you, something that I have learned from my path of spirituality that I follow. When I was going to get tested, I had clearly a wish in my mind that I should test negative for this. Okay. And that is, I would want to, right? However, I knew that my feeling, my plan is a very small part of the Almighty's bigger plan, the broader plan, of which I'm a very small part. Yeah. So I that the test can come negative or positive. My wish is negative. I conveyed it to the universe, to the field of pure potentiality, to this Almighty God. But then ultimately result lies in his hands. So when I got there, when I finally had the report in my hand, my eyes are trying to read negative. Obviously. Yeah. Written was positive. So I came back and I went to quarantine for 14 days. So the first thing that I learned was that faith is not always getting what you want. Yeah. Faith, accepting what you have and knowing that it is for the best. Okay. So, Mr. Pankaj, I would like to know that what all precautions you took in those 14 days when you quarantined yourself. I can talk like
for minutes about the things that were suggested to me, the calls that were coming. ये ले लो, वो खा लो, वो vitamin C भी ले लो. Like there were so many things that were conveyed. There's one thing I would really like to tell all the viewers and listeners right now. सबसे पहला precaution जो मैंने लिया था ना, कि मैंने कोविड को यहाँ नहीं चढ़ने देना. Very nice, absolutely. अगर यहाँ आ गया तो फिर जो बाकी कुछ भी दवाई लेने वाला हूँ, whatever I'm going to consume, it is not going to help. And I really believe that yes, there are cases where people's some ailing illness, it was like it reoccurred after getting in touch with COVID, getting infected by COVID. तो वहाँ कुछ मैं मानता हूँ severe cases रहे, और second wave में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हम सब जानते हैं. My condolences to all the families जिसने किसी को भी खोया है. पर हम जानते हैं कि हमारे हाथ में जितना है हम उतना ही कर सकते हैं. तो फिर भी बता देता हूँ जो मैंने precautions लिए. गर्म पानी, steam I guess was the most effective thing. Yeah. Precaution अपने आप को खुश रखा. मैंने इतनी ज़्यादा सीरीज देखी Netflix पे जो मुझे अच्छी लगती थी. That's great. I was reading a wonderful book named 40 Rules of Love by Alif Shafaq, and that book really helped me evolve so much I cannot tell you. और मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड किए, और एक खास बात जो मैंने की, मैं एक रेडियो प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, संत निरंकारी मिशन के एक रेडियो प्रोग्राम है, उसका नाम है वॉइस डिवाइन. तो उसमें मैं मिशन टीम में भी हूँ और एंकर भी हूँ. तो वहाँ पे मैंने 14 दिन में बैठ के अपने पूरे एक्सपीरियंस का एक एपिसोड बनाया कि मैंने क्या. So this is something so nice which I am hearing from you, that you did not go into depression. There was nothing negativity, but you charged yourself up with optimism. And you were so positive. I really like the thing which you said that, I didn't allow COVID to reach my head and brain over here, but you fought with your, firm belief and determination. And all the time, I mean, you did not while away your time just lying, sleeping, doing nothing. On the contrary, you utilized those 14 days and doing something creative. So you had written the episodes for your show. Oh, that's great. That's great. You said, I would really like to tell this. I also lied on the bed for hours. I slept. हमारी शिकायतें क्या है लाइफ से? टाइम नहीं मिलता. अबे टाइम मिला ना, अब 14 दिन लेटे रहो, किसने रोका है? तो मैं लेट. खाना था, खाया भी, और प्रिकॉशंस लेने थे वो ली, जो मेडिसिन अवेलेबल थी वो ली. मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा. थोड़े दिन पहले मैं किसी के साथ बैठा था, उसने मुझसे कहा कि भाई अगर मैं बाहर जाने लगा काम पे और मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा? भाई इमेजिन कर मैक्सिमम क्या होगा? कहता क्या? अगर मैक्सिमम ये होगा कि तुम मर सकते हो. तो उसने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं ये वो सच बोल रहा हूँ जिसको हम पता नहीं क्यों आंख बंद करके भागना चाहते हैं, और इस भागने की वजह से आज को क्यों जीना छोड़ देते हैं. इवेंचुअली एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई. और मैं कोई फिलोसोफर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, आई एम सॉरी. मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा. आई वांट टू लिव माय लाइफ दिस वे एंड आई ट्राई टू लिव इट दिस वे. इवेंचुअली एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे. कब आएगा मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, द ब्यूटी ऑफ गॉड्स प्लान. तो आज तो जी लें. एग्जैक्टली. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मूवी देख सकते हैं, बट जब लाइफ में अपनाने की बात आती है तो टेंशन लेनी है, तो परेशान होना है. सो शैली जी, व्हाट was I just tried to live one moment at a time, one step at a time, and that really helped me. And वो 14 दिन मैं कह सकता हूँ God's grace ठीक निकल गए, अच्छे निकल. Have you taken any special diet on this course for 14 days? Yeah, see, my special diet was what I loved. I ate what I loved. That is what most special is. If you're asking about something that doctors suggest, किसी ने किसी को तब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं पता था, और आज भी मुझे लगता है नहीं पता है, राइट? नहीं, इलाज तो कोई भी नहीं है, राइट? तो मेरे लिए स्पेशल वर्ड का मतलब था जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो हेल्दी लगता है वो खाओ. तो जो अच्छा लगा वो खाया, जो हेल्दी लगा वो खाया. पता नहीं कितने तरीके की बॉटल्स थी मेरे रूम में, कोई एक वो सिरप है, कोई दूसरा सिरप है, कोई टैबलेट्स हैं, ले रहा था क्योंकि मैं जानता था इन सब ने अपना पार्ट प्ले करना है मेरी बॉडी के अंदर जाके. सबसे बड़ी टैबलेट थी खुशी की टैबलेट, पॉजिटिविटी की टैबलेट. वो टैबलेट मैं दिन में 10 बार खाता. Very nice. That was the best thing I think. It's done magic to cure you up of this. My second question is, like, what family support you got during this
a period of stress? Let me approach to this question from a different side. Yeah. अपनी अपनी वाइफ और बेटे को तो जब जिस दिन मुझे एक्चुअली उससे 3-4 दिन पहले ना मुझे थोड़ा सा फीवर हुआ था और अगले क्या था, तो अभी हमको सबको लगता है थकावट की वजह से हरारत हो गई होगी, थोड़ा बहुत फीवर चलता है, लेकिन जिस दिन हुआ उस दिन विजडम प्रिवेल, और पहले दिन जब फीवर हुआ तो मैंने कहा देखो चाहे थोड़ा सा ही हुआ है, आप लोग ना मम्मा के घर चले जाओ अपनी, तो वो अपनी नानी घर प्रिकॉशन से अपने आप को टेस्ट से 4 दिन पहले ही कर दिया था एक्चुअली, दैट्स हाउ द स्टोरी गोस। तो अभी थे और कोई भी नहीं था। अच्छा। मैं एक बात सबसे यहाँ कहना चाहूंगा, हम फैमिली को ना बहुत वी टेक फैमिली टेकन फॉर ग्रांटेड एट टाइम्स। मैंने जो एपिसोड बनाया था उसमें एक बात लिखी थी, इन 14 दिनों में द ओनली ह्यूमन टच दैट आई हैड वाज माय सेल्फ, नो अदर ह्यूमन टच, नो हग टू माय सन्स, नो होल्डिंग माय हैंड, my wife's hand, not able to touch my mother's feet. Exactly. ये privileges जिनको हम बहुत lightly लेते हैं ना, बहुत आराम से ले लेते हैं कि लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, क्या हो गया, 4 दिन बात नहीं की, तो ये सारे privileges चले गए थे। Yes, the family support I had, my mother was there throughout. कुछ भी चाहिए बेटा, बहुत प्यार से 15 दिन डील किया। My wife was phone all the time कि आप ठीक हो, बेटे से वीडियो कॉल्स होती रही, सिस्टर से बात होती रही, और जो मेरा स्पिरिचुअल सर्कल है वो फोन कर करके कहते रहे कि बस ये तो कोरोना आपकी एंटीबॉडीज बनाने आया है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Okay. Wonderful support I had. So that's good. That's such a wonderful thing. But I really liked that you had fallen in love with yourself, because for 24/7, you know, you lived a life with the fullest, and that too at the present. And I really liked your statement, which you said, nobody knows what's going to happen in future, but then make your present beautiful so that you can cherish it forever in future. That's quite good. And besides that, have you taken any first dose of vaccination for yourself? Yeah, I received the first dose of vaccination, and that's okay. I had a fever for 1 day, and लॉकडाउन तो कोई काम वाम इफेक्ट नहीं हुआ, तो एक दिन फीवर हुआ, उसके बाद सब ठीक हो गया। And I'm waiting for the next dose, which is about due in 8th or 9th August. So Okay, because 8th or 9th August. Okay. This Covishield done, and I guess now it's 3 months time to get the second dose. Okay, that's great. That's great. So to आप ऐसा मत सोचिए कि ये वैक्सीनेशन नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, आप जाइए। देखिए एक बात जरूर है शैली जी, हमें जितना कर सकते हैं ना बस उतना करना चाहिए। इंसान को क्या होता है, जो चीजें नहीं भी कर सकते ना उसके बारे में सोच सोच के बोलना, परेशान होना, एनर्जी वेस्ट करना हमें अच्छे से आता है सबको। सो माय sincere request to everybody is go get yourself vaccinated and rest you leave it to the God. उसके बाद भी अगर किसी को होना है तो होगा, और किसी को उसके बिना भी नहीं होना तो नहीं। Yeah, ultimately it is destiny. You never know what's written for us in future. Yes. मैं चाहूंगा यहाँ पे, आपने एक बात, you like this that I fell in love with myself. Yeah. Everyone to fall in love with themselves, because self-love is the need of the hour. And if you can't love yourselves, don't love yourself in a selfish way. Love yourself in a giving way. And if you can't love yourself, you can't love anybody alone. Great. Very impressive. Okay. Any post-COVID care you did for yourself? Once you thought, yes, now I'm all well, but I shouldn't catch this infection again. So what all measures or precautions you took? Yeah, see, I would like to say this, that I have never been, like this कि चलो अभी हो गया है तो कोई बात नहीं, अभी चलेगा इसके बाद, तो मैं कभी भी परवाह नहीं हुआ इसको लेके। और I guess सबसे पहला प्रिकॉशन इज मास्क मत उतारिए आप, अगर आपको दोनों डोज लग गई है तब भी मत उतारिए। और पोस्ट कोविड यही था कि जो भी एक I guess the best thing is you work on your immunity, and that is what I did. I tried to build on my immunity. I joined yoga. I guess that is a wonderful thing to do अगर आपके पास टाइम है। Wow. I have a firm belief in this yoga system, and I believe it's a complete therapy for your body and mind also. So I joined yoga and those breathing exercises, because mostly it is affecting the lungs, this virus. Yeah.
काम करके मुझे लगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सो आई ट्राइड इट, थॉट इट्स टाइम. Okay, that's very nice. But what about your work profile? Like, are you working from home or are you going out now? I would love to work from home, but I'm sorry I don't have such a profile. I'm a businessman. मेरी दुकान है करोल बाग में, जहाँ Okay. पे होलसेल सेल्स होती हैं. So yes, वो 14 दिन जब मैं कोविड में था, तो वो 14 दिन भी मैं yes, doing work for 14 days was another factor which kept me so energetic. कि आप डील कर रहे हो, आपका माइंड इंग्रॉस्ड है काम में भी और बाकी चीजों में भी. तो माय पार्टनर वाज देयर एट द वर्क प्लेस. Okay, that's cool. कि आप अगर थैंक यू करना चाहें भगवान का, तो कितने रीजंस हैं. मेरे को 9 सितंबर को हुआ और I was tested negative. 25th I joined back my work. 29th को मेरे पार्टनर को हुआ. Oh, so it happened in shift. Yes, it happened in shifts, right? Okay. However, मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा. ये जो मैंने अभी बात बोली है ना, इसको मैं एक टर्म देता हूँ relative thanks. That my thanks related to the shift that happened. कि उनको भी घर होंगे जहाँ एक ही साथ सबको हुआ होगा. Exactly. Yes, yes, yes. शायद किसी की डेथ भी हुई होगी, पर कोविड के अलावा भी तो हमने लोगों को खोया है. मैं अपने पार्टनर कर रहा हूँ, उन्होंने इस साल मार्च में अपनी वाइफ को खोया बिकॉज ऑफ कैंसर. Oh, seriously? Yeah. So मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, देखिए खोया तो सबने किसी ना किसी को है. Yeah. कि कोविड में कोई चला जाए तो ठीक है, वो भी एक मुश्किल है पेंडेमिक में जाना, बट द पॉइंट इज कि ये लॉसेस तो हम सबने देखे हैं. तो लॉसेस हैं, पर जीना ना छोड़ें. जिंदगी सबसे बड़ा गिफ्ट है. ये बात कहने में लगता है कि ये बंदा बोल रहा है, शायद कोई फिलोसफर होगा. जिंदगी सबसे बड़ा गिफ्ट है, इसको मत छोड़िए कभी भी. Very, very well spoken and quite inspirational for the viewers also to hear it out from you. But I request Mr. Pankaj to kindly give 3 pieces of advice to our viewers that in case if it happens to somebody in the family, what 3 strong values they should have to just combat Corona without any fear. Okay, 3 things. Very difficult to get them in 3. I'll however try. So first thing first. अभी 2 सिचुएशंस लेते हैं. फर्स्ट में अगर मानो किसी को खुद को हो जाता है, डोंट पैनिक. पैनिक इज द वर्ड. और पैनिक वर्ड को ही मत बोलो. चलो मैं भी नहीं बोलता आपको डोंट पैनिक. लीव इट. लेट्स पुट इट फ्रॉम अ डिफरेंट साइड. स्टे ओके. हो गया है, निकल भी जाए. मैं ना एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जिनके पास कभी-कभी कुछ पेट के लिए दवाई लेने जाता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क मत पहनो. वो इतने बेपरवाह हैं. लापरवाह नहीं कह रहा हूँ मैं, जानबूझ के बेपरवाह कह रहा हूँ. बेपरवाह. मैं कहा भैया आप 4 महीने से बिना मास्क क्यों, आपको हुआ भी नहीं कोरोना? कहते भाई देखो, एक फ्लू है, होगा भी ना तो दूसरे फ्लू की तरह निकल भी जाएगा, तो थोड़ा ठंड रखो. तो मैं सबसे कहूंगा ठंड रखो. अगर आपको हो जाता है तो ठंड रखो, और किसी को हो जाता है तो उस बेचारे को भी धक्का ना दे कि तुझे कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा. सब ठीक होगा. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सब ठीक है और सब ठीक ही होगा. तो पहली एडवाइस, कोरोना को जैसे कि मैंने कहा यहाँ मत चढ़ने देना. बाकी सब चलेगा, बाकी सब चलेगा. लंग्स भी ठीक हो जाएंगी. यहाँ चढ़ गया ना तो उसका कोई इलाज नहीं. तो और सेकेंड एडवाइस, किसी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और मेरी तीसरी एडवाइस ये है, 14 दिन मिलते हैं क्वारंटीन के. किसी को रिकवर करने में 20-25 दिन भी लगे, महीना भी लगा, मैंने देखा. तो ना वो सारी चीजें जो अच्छी लगती हैं कर डालो. Okay, that's great. हाउ मैंने जो रेडियो प्रोग्राम बनाया था शैली जी, आई वुड लव टू टेल. वो प्रोग्राम तो स्पिरिचुअल है, लेकिन मैंने नेटफ्लिक्स की सीरीज से भी जो सीखा ना वो भी खींच के उसमें डाल दिया. जो मैंने वो भी डाल दिया. अपने 14 दिन के अनुभव भी डाल दिए कि भाई ये ह्यूमन टच कितना इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करो अब 14 दिन बिना परिवार के रहना पड़ेगा, और वैसे लोग सालों साल एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, है ना. तो तीसरी चीज ये कि वो 1 महीने में यूज इट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो and come after a month or 14 days, whatever time it is taking or it took you, come out as a better version of yourself. That's it.
So I am really impressed, Mr. Pankaj Popli, with your inspiration and motivational talk. You are right now sitting in front of me and saying, I'm not a philosopher. I'm not anybody who is a motivational speaker or somebody, but the way you have presented yourself, the way you have spoken and told the audience about your experience, it really tells me, yes, indeed, it was very motivating, very inspiring, and three catchphrases from your dialogues, which I personally feel that again and again you are saying the same thing, and it really touched me, that don't let corona enter into your mind. Fall in love with yourself, be positive, be creative, and be innovative. And the most, what to say, a very common thing which happens, I think, in each and every household is, that no joke, rootna and manana and everything. For a small thing, we don't talk, maybe for days, maybe for weeks, maybe for months and years. But this corona, this quarantine for 14 days, minimum 14 days, has taught us about our loved ones, about the family, about all our relations and all. And I think this phase is, I mean, it was a need of the hour to bring us even more close to the family. It realized our, familial bonds, our relationships and all. So this was something very, very, inspirational. And I really believe that, we have such, inspiring guests for us who visit on our platform and share their successful sagas. Now you are a COVID warrior. Rather, I will relate you to our COVID hero, superhero. Actually, I am really fortunate. I don't know how many guests will be listening to you or not, but if I have loved your, talking with you and your dialogues and conversation, I believe whoever is listening to you, I will request each and every one of them to please follow your advice. Especially you talked about yoga, you talk about the breathing exercises, because it affected the lungs in this second wave, it affected the lungs, and that was the best thing, pranayam. And those pranayam and those breathing exercises which actually helped our lungs to be stronger. And one last piece of advice you want to give for the third wave of corona which is about to hit us? Will it be more dangerous? Because we are, I mean, there are some news coming from here and there that it will be affecting the kids. So any special piece of advice you want to give to all the audience regarding third wave? Yeah, before I give that advice, I would really like to say this, that if I am a COVID hero, then you are the directors creating such heroes. So Oh, that's wow. all you. And then the first and foremost thing is, don't let the guard down. मास्क नहीं उतारना है, सैनिटाइजर, बिकॉज मैं भी ये सब कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो फिलोसॉफिकल है, जो कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ। 8 साल कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी साथ में योगा कर ले, उसको स्टीम कि चलो उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू लूज देयर लव्ड वंस, राइट? कहूँगा थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, जब आएगी तब आएगी, हमसे पूछ कर नहीं आएगी, अभी तक भी नहीं आई। अभी को मत छोड़िए, आज जीना थर्ड वेव की वजह से, लिव दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग बिना कोरोना की वजह से भी थर्ड वेव तक ना सर्वाइव कर पाए। रोज कोई ना कोई तो जा ही रहा है ना इस दुनिया। यस यस, वेरी ट्रू। तो आज को थर्ड वेव की वजह से जीना मत छोड़ना, आज आपका है और सिर्फ ये पल ही हमारा है। ये गानों में किसी शायर ने ऐसे नहीं लिखा होगा कि आने वाला पल जाने वाला है, क्योंकि एक्चुअली है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। भले पल को मत छोड़िएगा, लिव दिस लाइफ टू द फुलेस्ट, इट्स अ गिफ्ट, एंजॉय, जी भर के प्यार करो अपने लव्ड वन से। शिकायत करनी है तो कर लो, लेकिन उसके बाद वापस आ जाओ। तो बस इस पल को जी लो, यही रिक्वेस्ट है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता, हम में से कोई होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, बट यही बात, डोंट लेट द गार्ड डाउन ऑफ दिस मास्क, of sanitizers, and don't let the guard down of love and positivity as well, because that is the one thing that's going to keep you alive. That's it. Wonderful, wonderful talking to you. And I believe you have given us wonderful takeaways also. As normally we carry takeaways from any lovely webinar we attended. I guess my audience who might be listening to you has taken beautiful insights from you. So dear audience, what I gathered, talking to our special guest today is like, while it's difficult to be entirely optimistic, we must behave. This too shall pass. I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship. Life is short, as quoted by a special guest here, but then it is white.
This too shall pass. We should not, die in the fear of the third wave hitting us and India will not be anymore, world will not be anymore. And let its meaning permeate each day, whatever comes. This too shall pass. Again and again, I'm telling dear audience, don't be panic. As Mr. Popley has told us, need not panic at all. Everybody goes through the difficult times, but it is those who push through those difficult times who will eventually become successful in life. So don't give up, because this too shall pass. And the last sentence of Mr. Popley, who has told us, don't put the guards down. So this again, I've just summarized whatever he has spoken in front of. Okay, so many thanks to Mr. Pankaj Popley for being our guest today, for inspiring us, for motivating us, and sharing your successful journey so that it creates a positive impact on our audience too. And the social awareness which you have created around the scare of pandemic and Corona-19, this COVID-19, I think it goes well with our audience. So thank you so much for coming here and be of a guest. I wish we'll meet again. All the best, and whatever you're doing this is really a wonderful initiative. I wish all the strength and prosperity for your team, for entire team. Thank you so much. Bye-bye. And bye-bye, dear audience. All the best to you all.